Hello everyone, my name is Zainab and I welcome you all to our another session, the most requested session, wherein we are going to cover the most important questions for CLAT 2022. ठीक है, तो आज के सेशन में we'll be solving approx 2 passages. ये पैसेजेस कुछ ऐसे बनाए गए हैं वेयर इन कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से कुछ सिचुएशंस इंस्पायर्ड हैं, कुछ फैक्चुअल सिचुएशंस इंस्पायर्ड हैं, ताकि मैं वहां पे देखूं कि आप लॉ उन सिचुएशंस में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. एक पैसेज ऐसा है विच इज टुवर्ड्स द एंड, जहां पे वी हैव पिक समथिंग फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन. सो दैट विल बेसिकली चैलेंज कि आप क्या लॉ को या एडिटोरियल सेक्शन को, जो आप कहते रहते हैं कि मैम वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, मैम वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, या आप लोग जो अक्सर कहते रहते हैं कि मैम हमें मॉक्स में प्रॉब्लम जाता है, हमको समझ में नहीं आता कितने क्लोज ऑप्शंस रहते हैं, हाउ टू सिलेक्ट आपकी ये जो प्रॉब्लम है, उन सबको मैं आज केटर करने आई हूँ. ठीक है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाई हूँ विच आर रियल लाइफ इंस्पायर्ड एंड टू विच हैव वेरी वेरी क्लोज ऑप्शंस, ताकि आपको मैं ये सिखा सकूं, ये दिखा सकूं कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. सो गाइस, हाउ इज द जोश? इज इट हाई और लो? शुड वी स्टार्ट विद टुडेस सेशन? ठीक है, चलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, हम जो कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू द ड्रिल. द ड्रिल इज गोइंग टू बी, आप सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आपको मैं फैक्चुअल सिचुएशन दिखाऊंगी, आई विल बी शोइंग यू द ऑप्शंस एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द फैक्चुअल कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसा करा जाएगा. ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं. पैसेज को ध्यान से पढ़ना, फिर मैं फैक्चुअल सिचुएशन दिखाऊंगी, ऑप्शंस को ध्यान से देखना. इन केस अगर तुम्हारे साथ कहीं पे भी ये सिचुएशन आए कि आप पैसेज को आप नहीं पढ़ पाए हैं विद इन द टाइम फ्रेम दैट आई हैव गिवन यू, तो लीगल एज का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पैसेजेस ऑलरेडी पोस्ट करवा दिए गए हैं. अगर नहीं हुए होंगे तो एक आध मिनट के अंदर वो पोस्ट कर देंगे, आप वहां से भी सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस वहां से पढ़ सकते हैं, पर फैक्चुअल सिचुएशन के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा. चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी हु विल डू द सबसे अच्छी तरीके से कौन अपना स्कोर्स लाता है. चलो. Okay guys, so here's the first passage that you have. Read it आराम से. I will give you 2 odd minutes to read it. ठीक है, चलो. I hope the screen is visible to you all. Once you are done reading, just inform me, I'll scroll it down. Done reading? Chalo, scroll it down, read it. पैसेज पढ़ के हुआ आपका? Should I take you towards the factual situation now? Let me know if the pace is fine with you. ठीक है, done. Chalo, very good. Go on to the first factual situation. Read the first factual situation clearly. आराम से पढ़ो. Yes, Khushi, it is important for both the aspirants for 2022 and 2023. All of you who struggle with कि options कैसे eliminate करने हैं, right? आप लोग अक्सर ये हमें emails लिखते हैं. आज I'll be telling you
right here onto YouTube as to how you have to go about eliminating the options. Do not worry, just stay tuned and first do the questions, then I'll be taking you through the entire thing. Question 1 done. Should I scroll it further? Okay, move on to the second question. Come on, guys, buck up. Move on to the second question. Start marking the answers to the second question, guys. Second question done. Should we move forward? ठीक है, चलो. Move on to the third question now. Third question. Start marking the answers to the third question. Third done. Should we move to the fourth question? पूरा पैसेज आप लोग एक बार में सॉल्व कीजिए टिल द फिफ्थ क्वेश्चन, फिर मैं आपको पूरा एक ही बार में समझाऊंगी, ठीक है? डोंट बी इम्पेशेंट, आराम आराम से करो. Move on to the fourth question, guys. Start punching your answers for the fourth question. I am going through all your answers and seeing if you guys are going on the right track. Obviously, जब मैं explain करूंगी तो मैं पूरा सब कुछ correct answers बताऊंगी. अभी पहले मैं आपको assess करूं. Start punching in answers for the fourth question. Come on, guys, buck up.
Yash, I've read your query. I will respond to you in some time. Give me time. फोर्थ हो गया. चलो मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Start marking in answers for the fifth one. डिस्कस करना शुरू करें. हाउ डिड यू गाइज फाइंड दिस पैसेज? समझ में आया, नहीं आया? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पैसेज, यस और नो? आया समझ में? वॉज इट एन इजी पैसेज, डिफिकल्ट पैसेज, मिड पैसेज? आंसर्स काफी वेरिंग है, मैं देख रही हूँ हर ऑप्शन के अंदर यू गाइज आर कंफ्यूज्ड. ठीक है, चलो. अब as a lot of you keep asking me, a lot of you keep emailing me कि मैम दो ऑप्शंस के बीच में हम जाके फंस जाते हैं. अभी रिसेंट मॉक्स में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जा रही है बिकॉज ऑप्शंस आर सो क्लोज कि हमको एलिमिनेट करना नहीं आ रहा, राइट? तो दिस इज वन ऑफ दोज पैसेजेस ओनली, राइट? सारी सिचुएशंस यहाँ पे जितनी भी थी वो ऐसी थी चीज जो आप रियल लाइफ में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो रही है ना? तो अब हम इस पैसेज के थ्रू उसको सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस इट टुगेदर. ये हल्का सा मॉडरेट है, इसके बाद जो पैसेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उस पे है, पर घबराना नहीं उसको देख के. अभी इसको समझते हैं. Recently, the mayor of South Delhi Municipal Corporation kicked up a row with an appeal to close meat shops during the 9-day fasting period of Navratri. Will such an order imposing meat ban citing religious reasons be constitutionally valid? ये सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कुछ आंसर दिया है क्या? नहीं. Article 19, Clause 1, Subclause G of the Constitution states that all citizens shall have the right to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. ठीक है, ये इन्होंने सिंपली आर्टिकल को यहाँ पे लिखा है. This right is subject to Article 19, Clause 6, which states that the state can impose reasonable restrictions on the exercise of a right through law in the interest of general public. अब उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर कुछ वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर सकते हैं. यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े. द क्वेश्चन हियर वुड बी वेदर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक should mean the sentiments of the section of the population. In plethora of judgments, the court has let down a test to determine the reasonability of restriction. यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसके ऊपर कुछ जजमेंट्स ने बताया है कि वो रीजनेबल है भी कि नहीं है, उसके ऊपर कुछ कुछ उन्होंने टेस्ट को ले डाउन किया है. इट हैज हेल्ड दैट अ रिस्ट्रिक्शन टू बी वैलिड, एक रिस्ट्रिक्शन अगर लगाई गई है वो वैलिड तब ही मानी जाएगी अगर वहां पे डायरेक्ट एंड प्रोक्सिमेट नेक्सस है with the object the legislation seeks to achieve. नेक्सस है का मतलब क्या होता है बेटा? लिंक है कि जो वो ऑब्जेक्ट वो लेजिस्लेशन अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उन दोनों जो रिस्ट्रिक्शन है और जो ऑब्जेक्टिव जो लॉ अचीव करना चाह रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है भी कि नहीं है. एंड द रिस्ट्रिक्शन मस्ट नॉट बी इन एक्सेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस लेजिस्लेशन का, तो रिस्ट्रिक्शन उसके एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक प्रपोर्शनेट बैलेंस दोनों ही चीजों के बीच में मेंटेन होना चाहिए. क्लियर है यहां तक? Any issue, anyone so far? None? Should we proceed? Chalo. Now we will move to the next paragraph. While noting that the judges should base their decision not on social morals but as per the Constitution, the Supreme Court in the case of State of Madras versus VG Roe held that
Forming their opinion conception is what is reasonable, and the judges must be guided by sobering reflection that the Constitution is meant not only for the people of their way of thinking but for all. यानी कि वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उनके लिए नहीं बना है जो लॉ मेकर्स उनके जैसे सोचते हैं, बल्कि इट इज मेड फॉर ऑल। ठीक है, जो उनके जैसे नहीं भी सोचते हैं उनके लिए भी बना है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इन अ मैटर ऑफ मोहम्मद हनीफ कुरैशी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ राइट टू फूड। In it, the court upheld the ban of cow slaughtering, and it also considered nutritional needs and partially allowed it the slaughter of bovines, noting that for a large section of the poor people, consuming beef and buffalo flesh was also considered to be a matter of necessity. अब यहाँ पे उन्होंने मोहम्मद हनीफ कुरैशी के केस में राइट टू फूड को डिस्कस किया। उन्होंने यहाँ पे स्लॉटरिंग ऑफ काउस के ऊपर कुछ बात की, स्लॉटरिंग ऑफ बोवाइंस के ऊपर कुछ बात की। जो बोवाइंस होते हैं वो भी काउ से ही रिलेटेड रहते हैं। Such a ban imposed solely on the grounds of religious sentiments and which infringes on the fundamental rights under Article 21 and Article 19 falls foul of the post-Puttaswamy test of proportionality and reasonableness evolved by the Supreme Court. उन्होंने कहा कि अगर ये जो इन्होंने यहाँ पे बैन लगाया था या जो कुछ था, ये फॉल्स फाउल कर जाता है ऑफ द पुट्टुस्वामी जजमेंट। ठीक है, पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या उन्होंने बोला है कि वहां पे पुट्टुस्वामी जजमेंट में टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबलनेस लगा था कि आप अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो जरूरी है कि भाई वो जो टेस्ट है वो सबसे पहले एक प्रोपोर्शनल बैलेंस मेंटेन करे, वो रीजनेबल हो। और उन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें उसके बारे में बताई थी कि वो रिस्ट्रिक्शन का जो है वो डायरेक्ट या प्रोक्सिमेट नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट दैट द लेजिस्लेशन इज सीकिंग टू अचीव। यहाँ तक इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? इज एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी वर्ड ऑफ द पैसेज? याद रखना एक चीज विच आई हैव बीन टेलिंग यू इन द क्लासेस आल्सो, कि अगर तुम कभी पैसेज के किसी एक वर्ड में भी आके फंस जाते हो, डू नॉट वरी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट। डोंट वरी, आराम से उसको पढ़ते चलो, आगे करते चलो। ठीक है, चलो पैसेज समझ में आ गया, आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मंथ ऑफ December 2021, Christmas celebrations were around the corner. Since the celebrations would have meant gathering of a lot of people, the state government issued notice banning gathering of 10 or more people at any public place. Gathering को उन्होंने ban किया है of 10 or more people at any public place due to COVID-19 pandemic scare. The ban further required that the place of worships like church shall remain closed starting from 15th December till 31st December. अच्छा, तो बैन दो तरीके का लगा है, एक पब्लिक प्लेसेस पे कम लोग आएंगे और दूसरा कि चर्चेस इन सब में लोग ऑल टुगेदर नहीं जाएंगे। द क्रिश्चियन कम्युनिटी चैलेंज दीज प्रोहिबिशंस ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। नाउ फर्स्ट ऑफ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट डिड द पैसेज टॉक टू अस अबाउट? द पैसेज टॉक टू अस अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब अगर उन्होंने गैदरिंग को बैन किया है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट किसी को आप ऑल टुगेदर प्लेस ऑफ वर्शिप पे ही नहीं जान दो, वो तो थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। वो उसके ऊपर कुछ उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाई है, उन्होंने ऑल टुगेदर इसको बैन किया है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या ये जो बैन है या जो कुछ भी है, क्या ये बैन लगाना इनके ऊपर हम कह सकते हैं, क्या ये जो बैन गैदरिंग के ऊपर ऑल टुगेदर इन्होंने दोनों चीजों के ऊपर लगाया, क्या वो वैलिड है? हम कह सकते हैं ऑल टुगेदर तो वैलिड नहीं है। अब हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है द बैन ऑन गैदरिंग इज वैलिड। जो बात मैं आपको बताई थी, गैदरिंग के ऊपर तो वैलिड है, बट द बैन ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो वर्शिप के ऊपर जो बैन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एज इट वायलेट्स द राइट टू फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। अब क्या इस ऑप्शन ने हमें ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट टू रिलीजन? क्या ये बात बताई है? हमें नहीं बताई है। अगर ये बात हमें नहीं बताई है, अगर इसने हमें कोई रीजन ही नहीं दिया है, तो क्या हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस ऑप्शन इज डिवॉइड ऑफ लीगल रीजनिंग। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है? द बैन ऑन गैदरिंग एंड द बैन ऑन द प्लेस ऑफ वर्शिप इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। अब ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पे तो भाई इसने ऑल टुगेदर ये पब्लिक हेल्थ इन सबको ये ध्यान में रख ही नहीं रहा है ना, इसने तो ऑल टुगेदर ही कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो क्या हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो भी बैन लगाया था वो क्यों लगाया था? ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक।
और ये ऑप्शन तो उसके एकदम ही कॉन्ट्ररी जा रहा है, वो पब्लिक हेल्थ इन सबको देख ही नहीं रहा, वो बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव है, राइट टू रिलीजन के वायलेटिव है, हटाओ इसको, ये बात तो एकदम गलत है, इसलिए हमने इसको भी हटा दिया। अब डी ऑप्शन लिखते हैं, द बैन ऑन गैदरिंग एंड द बैन ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप आर वैलिड in the light of public health concerns due to the COVID-19 pandemic. I see a lot of you who marked this, but you know what? This option is incorrect. बेटा देखो, यहाँ पे दो तरीके के बैन हुए हैं. First is onto the place of worship and दूसरा है onto the ban on gathering. गैदरिंग पे लगाया फाइन, बट प्लेस ऑफ वर्शिप को ऑल टुगेदर अराउंड द टाइम ऑफ क्रिसमस, जहां पे लोगों के सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ये सब अटैच है, ऑल टुगेदर उसको बैन कर देना इज नॉट समथिंग दैट इज ओके. व्हाई इज इट नॉट ओके? क्योंकि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? ऑन टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. क्या इन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई है? नहीं. उन्होंने क्या किया है? ऑल टुगेदर ब्लैंकेट बैन इंपोज किया. तो क्या डी एज अ करेक्ट आंसर होगा? नहीं. द करेक्ट आंसर विल बी B for ball, which says that the ban on gathering is valid, but the ban on place of worship is not reasonable restriction, and hence it fails to test the test of constitutionality. Clear है? आगे बात समझ में? Any issue, anyone, any problem up till here? Should we move forward? ठीक है? Okay. चलो. Now we move on to the next question. सेकंड का आंसर आप लोगों ने क्या मार्क किया है? जस्ट राइट इट डाउन, लेट मी सी कि आप लोग क्या लिखा है आपने. Recently, there has been an increase in the number of stand-up comics in the country. A lot of these comics make public satires on politicians, judges, government service. The government is of the opinion that such public satires erode the confidence of people in the judicial and legislative systems, which is against public order. The government has issued a ruling that no stand-up comic should be made should make any political satire on politicians and judges. अब अगेन यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने ऑल टुगेदर ब्लैंकेट बैन लगाया है ऑन टू पॉलिटिशियंस एंड जजेस के ऊपर. कोई भी पॉलिटिकल सटायर, कोई भी पॉलिटिकल जोक नहीं होगा. अगेन, is this option taking into consideration, is this option as in the situation taking into consideration the reasonable restrictions which are into place? ये ले रहा है क्या? नहीं है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये बैन जो है, क्या ये बैन वैलिड है कि नहीं है? हम कह सकते हैं ये बैन वैलिड नहीं है. राइट? फॉर दैट वेरी रीजन मैं ऑप्शन नंबर ए एंड मैं ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकती हूँ. क्यों एलिमिनेट कर रही हूं मैं? बिकॉज इट इज स्टेटिंग दैट दिस बैन इज वैलिड. However, what was my passage talking about? My passage was talking about reasonable restrictions, right? तो मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया. अब मुझे B एंड C के बीच में से एक ऑप्शन चूज करना है, राइट? ओके. अब जो मेरा ऑप्शन नंबर B है वो बोलता है the ban is not valid so far as it relates to politicians, but is valid insofar as it relates to judges, and judges are the highest position holders in the country, and it is essential to maintain faith in the judicial system. देखो ये आंसर पढ़ने में लंबा है, अच्छा लग रहा है, बट द पॉइंट इज, क्या ये ऑप्शन तुम्हारे पैसेज से सबसे ज्यादा जाके रिलेट करता है कि नहीं? नहीं कर रहा. इनफैक्ट द पैसेज डिड नॉट इवन टेल यू दैट जजेस आर द हाईएस्ट पोजीशन होल्डर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्या उसने हमें बताया? नहीं. टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि बेटा जो ऑप्शन आपके पैसेज से सबसे ज्यादा जाके रिलेट करे, आप उसे एज अ करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए. तो क्या मैं बी को एज अ करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकती हूँ? नहीं. सी क्या बोलता है? द बैन इज नॉट वैलिड एज इट अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहीं पे बात जो हमारी पैसेज में हो रही थी वो यहाँ पे भी हो रही है, हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात करें, शुड वी मूव फर्दर? ठीक है, चलो. थर्ड का आंसर जल्दी से आप लोग अपना मुझे बताओ, फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ. जब तक आप अपने आंसर्स पंच इन कर रहे हैं तब तक मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन समझाती हूँ. ठीक है, ओके. Due to the increase in COVID cases in the country, the government launched Arogya Setu app for management of COVID cases in a locality. The government has made downloading of the app mandatory for all the citizens. However, a section of the public is concerned with the infringement of right to privacy, as the app makes it mandatory to share the location and to provide other data like travel history, blood group, age, health report, like comorbid status, etc. Comorbid status ये सब क्या होता है बेटा? Anything that is relating to health, disease, medical history or something of that sort. Through public interest litigation, this app is challenged for violating the right to privacy of people. अच्छा,
अब एक बात बताना, यहाँ पे क्या हुआ है कि वो आपके एक ऐप के थ्रू आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका ब्लड ग्रुप, आपका एज, ये सब देख रहे हैं। व्हाई इज इट डूइंग इट? इट इज डूइंग इट टू इंश्योर दैट कोविड-19 का जो पैंडेमिक का सिचुएशन है वो ज्यादा बढ़े ना, राइट? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंश्योर। अब यहाँ पे हमारे पैसेज किसके बारे में बात करता? पैसेज बात करता था, अगर मैं बात करूं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता था। इट टॉक्ड अबाउट proximate link between the object that the legislation is trying to achieve and the object of the reasonable restriction, right? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे whatever they are doing, they are trying to prevent the spread of COVID-19 वायरस, है ना? तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ऐप वायलेट कर रहा है द राइट टू privacy ऑफ पीपल, यस और नो? हम कह सकते हैं नो, इट इज नॉट वायलेटिंग। व्हाई इज इट नॉट वायलेटिंग? क्योंकि यहाँ पे एक proximate link है between the object that the app is trying to achieve एंड उसके ऊपर जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि भैया आपका जहां पे भी आप जाएंगे, जो कुछ भी जाएंगे, हम वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करेंगे, है ना? एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, राइट? तो यहाँ पे क्या ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट? तो इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई हमने बोला कि ऑप्शन नंबर सी तो इज एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन नंबर बी भी इसीलिए एलिमिनेट हो गया है। अब मुझे ए एंड डी के बीच में एक ऑप्शन चूज करना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बी एंड सी मैंने कैसे वायलेट किया, क्योंकि एलिमिनेट किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं दैट द ऐप हैज वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी, और सी क्या बोल रहा है? दैट द ऐप हैज वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी। और हमने अभी समझा कि भाई हमारा पैसेज क्लियरली ये बात बोलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं इफ देयर इज अ प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग सॉट टू अचीव और उसका एंड रिजल्ट क्या है, तो हम वहां पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इस तीन को एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे ए एंड डी के बीच में से एक ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन क्या बोलता है? दैट द ऐप हैज वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी सिंस द कंसर्न्स ऑफ पब्लिक हेल्थ आर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट द कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी। I see a lot of you marking this very answer, right? But tell me one thing, where did the passage mention more important, less important, highly important? क्या ऐसी बातें पैसेज ने की थी? नहीं। क्या अगर नहीं की थी तो भाई क्या हम इसको एज एन आंसर लेंगे? नहीं। Hence, what will be the correct answer? The correct answer is going to be D for dog, which is the app has not violated the right to privacy since the requirement of the apps are directly related to the general health concerns of the government. ठीक है? तो hence D is the correct answer here. ठीक है? चलो। should we move further? Any doubt up till here? किसी को भी कोई भी इशू है यहाँ तक? Hi Asha, welcome to my sessions. So all those people who are seeing me for the first time, my name is Zainab, head of department for the subject of legal reasoning, right? Here at LegalEdge, right? चलो आगे बढ़े अब हम। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आप लोगों ने क्या आंसर्स मार्क किए? पहले आप लोग मुझे वो बताइए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। आगे बढ़े, आंसर्स तुम लोग पंचिंग करो फोर्थ क्वेश्चन के। In the recent years, there have been an increase in the number of private schools in India. The government was concerned that the private schools charge exorbitant fees from the students. Exorbitant fees मतलब बहुत ज़्यादा fees charge कर रहे हैं। In order to curb the high fees, the government issued a notice asking the school to charge the fees without profiteering on education. मतलब आप इतना profit मत बनाओ education के ऊपर, such that there is no harassment of children and their parents, ताकि इससे parents और children का harassment ना हो। The Association of Private School challenges the notice, arguing that it violates their right to business since it curbs the reasonable expectation of earning profits. अच्छा, अब एक बात बताना, what are these school doing? They are charging exorbitant fees, बहुत ज्यादा high fees कर रहे हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ restriction लगा दिया है। What did my passage talk about? कि बॉस जरूर से there is article 19 clause 1 subclause G which guarantees you right to freedom of trade, profession and business. However, उसके ऊपर हम reasonable restrictions लगा सकते हैं। कब कब लगा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ मैं आपको पैसेज दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ आप तब लगा सकते हैं कि अगर डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट नेक्सस होगा विद द ऑब्जेक्ट द लेजिस्लेशन इज सीकिंग टू अचीव। अब लेजिस्लेशन यहाँ पे क्या करना चाहता है? हरासमेंट ऑफ द पेरेंट्स को रोकना चाहता है। तो क्या डायरेक्ट या प्रॉक्सिमेट नेक्सस है कि भाई फीस कम होगी तो हरासमेंट ऑफ द पेरेंट्स नहीं होगा? है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या एक्सेस है ऑफ द ऑब्जेक्ट में? ऐसा तो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा दी है कि ऑब्जेक्ट को वो सरपास कर रही है, ऐसा तो नहीं है। क्या इन दोनों चीजों के बीच में उन्होंने प्रोपोर्शनेट बैलेंस करा है? वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप फीस ऑल टुगेदर इनकी हटा दो, बस वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट फीस मत करो। तो मतलब क्या प्रोपोर्शनेट बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। हेंस
व्हाट कैन वी से ओवर हियर? वी कैन से कि भाई यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है या जो कुछ भी है ऑन द फंडामेंटल राइट्स, इट इज नॉट अनरीजनेबल। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब अपन ऑप्शन नंबर बी को पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स टू बिजनेस ट्रेड इज नॉट अनरीजनेबल एज इंडिया हैज dearth of schools and if the schools are allowed to charge as per their will, poor sections of the society will not be able to teach their kids. I see a lot of you marking this answer, beta. Understand one thing, जब भी लीगल रीजनिंग करो ना, इमोशंस को अपने कहीं दूर पार्क करके आया करो, नहीं उसके अंदर मत जाओ। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में डर्ट ऑफ स्कूल्स है, विल बी पुअर सेक्शन विल नॉट बी एबल टू टीच देयर किड्स, ये सब क्या ये सारी बातें पैसेज में तुम्हें कहीं पे भी दी थी? नहीं दी थी। अगर नहीं दी थी बेटा, तो आप क्यों इसे एज आंसर मार्क करेंगे? याद रखो, 2 स्लाइड्स के अंदर पैसेज था। ऑब्वियसली दे सर्टेनली वांट यू टू गो एंड अप्लाई दैट वेरी पैसेज टू द फैक्चुअल सिचुएशन। नहीं तो वो तुमसे ऐसे ही सवाल पूछते थे, लाइक आई अंडरस्टैंड यू बीइंग वेरी एम्पैथेटिक, अरे बेचारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये वो, बट is it anyway related to the passage? No. If it is not related to the passage, why will we select it as an answer? We will not select it as an answer. चलो सी को देखते हैं। सी क्या बोलता है? The restriction on fundamental right to business trade is unreasonable as it fails to take into consideration the first aim of the private institutes to earn profit. अरे बाबा, ये ऑप्शन तो मेरा absolutely incorrect है। क्यों incorrect है? Because it is charging exorbitant fees। यानी कि क्या, अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर reasonable restriction लगाया है तो the government is allowed to do so। क्या मैं सी को एलिमिनेट कर सकती हूँ? हाँ। Let's move on to option number D. ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट टू बिजनेस ट्रेड इज अनरीजनेबल एज इट curtails the right of the business or trade in more restrictive manner than is necessary to achieve the object of imparting education. बेटा देखना, ये ऑप्शन कह रहा है it is curtailing in more restrictive manner। पर एक बात बताना, क्या ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है, क्या हमें ये कोई रीजन दे रहा है कि क्यों है ये इन मोर रिस्ट्रिक्टिव मैनर? क्या ये बात बता रहा है? नहीं। ये तो एक ब्लेटेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट बना दिया। अगर उन्होंने ब्लेटेंटली एक स्टेटमेंट बना दिया, क्या हम इसको एज अ करेक्ट आंसर लेंगे? नहीं। हेंस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। व्हाट विल बी माय करेक्ट आंसर? माय करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए। The restriction on fundamental right to business trade is not unreasonable as it aims to preventing the harassment of student and balance it with the right to education. अब देखना, एक बात यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन्होंने reasonableness के ऊपर बात की, जो कि पैसेज के अंदर बात की गई थी, preventing the harassment के बारे में बात की, और balancing की बात की, जो कि हमारा पैसेज भी बात करता था, है ना? तो hence here A is more in consonance with my passage, hence that is the correct answer. Let's move on to the next question. यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? Any issue, anyone? Any problem, anybody beta? No issues, are you guys sure? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फिफ्थ के आंसर्स आप लोग मुझे अपने बताइए, आप लोगों ने क्या लिखा है। चलो, जब तक आप लोग अपने आंसर्स पंच इन कर रहे हैं, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Due to rise in the cases of loan defaulters leaving the country in order to avoid proceedings for the recovery of loan amount, the government has passed a law which requires every person, ध्यान देना, which requires every person having a loan above 1 lakh to take permission from the lender credit before applying for visa to any country. अब यहां तक आपने पढ़ लिया। अब देखना, ऑब्जेक्ट क्या था इनको? इन्होंने देखना था कि लोन डिफॉल्टर्स लीविंग द कंट्री, और इन्होंने अब जाके एक ये नई चीज लाई है कि कोई भी इंसान 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट का पैसा लेगा, लोन लेगा, उसको लेंडर से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर विजिटिंग एनी कंट्री। ठीक है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज चैलेंज एज बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? हमारा ऑब्जेक्ट था हमारा कि भाई हम जो इकोनॉमिक डिफॉल्टर्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम इलोपिंग द कंट्री, राइट? यस और नो? यस, हमें हमारा वो था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑल टुगेदर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि एवरी पर्सन हैविंग अ लोन अबव ₹1 लाख उसको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यार ये चीज तो रीजनेबल नहीं है। एवरी पर्सन इज टू टेक अ लोन। आपने जब ये चीज लाए थे, आपने क्यों लाए थे? क्योंकि लोन डिफॉल्टर्स या इकोनॉमिक डिफॉल्टर्स कंट्री को एलोप कर जाते थे। अब आपने तो हर पर्सन पे ये चीज ला दी। तो नाउ व्हाट कैन आई से दैट द रिस्ट्रिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल? आई कैन सर्टेनली से दैट द रिस्ट्रिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेक्सस नहीं है बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट द लेजिस्लेशन इज ट्राइंग टू अचीव एंड द आउटकम आउट ऑफ इट, है ना? तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वाले ऑप्शंस को हटा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनी इशू, एनीवन? आगे बढ़े। अब मैं ए एंड सी के बीच में से एक ऑप्शन चूज करूं। देखो सी क्या बोलता है?
The restriction is unconstitutional since taking permission every time to leave the country shall severely prejudice a person's fundamental right to movement. अच्छा, अभी कह रहे हैं it shall severely prejudice. बट एक बात बताना कि ये ऑप्शन क्या तुम्हारे पैसेज से सबसे ज्यादा जाके लिंक करता है? नहीं. पैसेज किसके बारे में था? अगेन लेट्स टॉक अबाउट इट. इट वाज टॉकिंग अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इट वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमेट लिंक, इट वाज टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज. क्या ये ऑप्शन उनमें से किसी के ऊपर भी बात कर रहा है? नहीं. Hence, what will I say? That C is incorrect. What is A? A देखो अब ज्यादा हमारे पैसेज से लिंक करता है, जो कि आपको मैं बार बार बताती रहती हूँ ना कि बेटा ये ऑप्शन हमारे पैसेज से ज्यादा लिंक करता है, लिंक करता है, लिंक करता है. क्यों? देखो, देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है. The restriction is unconstitutional since there is no direct link between the object sought and the restriction imposed, and hence the restriction is unreasonable. Again देखो, ये भी ये नो डायरेक्ट लिंक के बारे में बात करता है. मतलब कि क्या ये भी उसी चीज के बारे में बात करता है जो कि पैसेज बात करता है, राइट? पैसेज के अंदर भी बोल रहा था ना नो प्रॉक्सिमेट नेक्सस, और मैंने आपको क्या बताया था नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब होता है लिंक, राइट? सो हियर ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एनी इशू, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी सो फार? Okay, now do one thing. Tell me your score. Anybody who scored 5 on 5? Anybody? अपने स्कोर्स लिखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैसेज पे लेके जाऊंगी. बिफोर आई टेक यू टू द नेक्स्ट पैसेज, आई वांट यू टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है? घबराना नहीं पैसेज को देख के. आई कुड हैव इजीली ब्रॉट एन अ वेरी इजी पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड बीन लाइक कि ओके गाइस दिस इज डन एंड मैं निकल जाती हूँ, है ना? The reason I chose that very passage was because I wanted to tell you as to how you are supposed to eliminate options, how you are supposed to, why newspaper reading is important for you, how like you know आपको कैसे एडिटोरियल को जब आप पढ़ते हो या जो कुछ भी करते हो उससे लीगल सिचुएशंस कैसे बनती है, मुझे उन सबको आपको सिखाना था. तो दैट इज द रीजन आई ब्रॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. घबराना नहीं, ये क्लैट का पेपर नहीं है. ठीक है? बस हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ओके, तौयबा हैज गॉट 5 on 5. Priyanshu has got 5 on 5. Agastya has got 5 on 5. Aditya Kumar has got 5 on 5. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, should we move forward now? आगे के पैसेज पे जाएं? ठीक है, चलो. Okay, guys, move on to the next question. Is the passage visible to you all? Guys, stop using the chat window. Read the passage. This is an important passage. आराम से पढ़ो. Once you are done reading, just inform me. I will scroll it down to the other half of the passage. A minute more, rather a few seconds more, and then I'll be scrolling.
Done? Should I scroll it down? Done reading? Should I show you the factual situations now? Done. ठीक है, चलो. Move to the factual situation now. Start punching in your answers for the sixth question. Read it? आगे बढ़े? ठीक है, चलो. Move on to the seventh question now. आराम से करो seventh question. कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो. The passages are there onto your Telegram channel already, beta. You just need to see the questions here. Moving on to the eighth question now.
Start punching in your answers to the eighth question. एट्थ डन. आगे बढ़ाऊं मैं? चलिए आगे बढ़िए. Move on to the ninth question. Okay. Guys, start punching in answers to the ninth question. Move on to the 10th question. Start marking your answers to the 10th question. टेंथ का आंसर मार्क करो. चलो. डन. बढ़े आगे. चलो. कैसा लगा ये पैसेज? आर यू गाइज अलाइव और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ, हाउ डिड यू गाइज फाइंड दिस पैसेज? Was it easy, not easy for you? Was it moderate, not moderate? Did you understand? You didn't understand? चलो ठीक है, देखते हैं कि जो लोग कह रहे हैं इजी था. ठीक है, देखते हैं. लेट्स सी. ओके, ठीक है. ओके. The three arrests over the past month of journalist Fahad Shah in Kashmir have once again suggested that Jammu and Kashmir police believes it to be accountable only for itself and considers journalism as a crime. कौन कंसिडर करता है? जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस कंसिडर करती है एज पर द ऑथर.
Shah, the founding director of Kashmir Walla, an online portal, was first arrested on February 4th by the Pulwama District Police. This was 4 days after the portal published a report of an encounter. ठीक है कि जो पोर्टल था कश्मीर वल्ला वहां पे एक रिपोर्ट थी ऑफ एन एनकाउंटर उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया इन विच द रिपोर्टर आल्सो स्पोक टू द फैमिली ऑफ द टीनेज बॉय किल्ड अलोंग विद 3 मिलिटेंट्स ठीक है कि जो बच्चा मरा वहां पे था मरा था या जो कुछ भी था विद 3 मिलिटेंट्स उनके ऊपर भी उन्होंने वहां पे करा पोस्ट किया था रिपोर्ट के अंदर. The report included the police claimed that the boy was a hybrid militant. Hybrid militant क्या होता है बेटा? Anybody who's posing as a civilian yet doing terrorist activities. His parents denied the acquisitions and demanded his body to be returned to them. ठीक है पेरेंट्स से कहा हम ये सब नहीं मानते आप हमें उसकी बॉडी रिटर्न करो. Shah also posted a video version of the report. उस रिपोर्ट का एक वीडियो वर्जन भी उसने पोस्ट किया. The case against him was that he uploaded anti-national content on social media sites, allegedly glorifying the terrorist activities and causing a dent to the image of law enforcing agencies, besides causing ill will and disaffection against the country. अब शाह के अगेंस्ट ये बोला गया मतलब बोला गया उसको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि भाई वो एक डेंट कॉज कर रहा था टू द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इलविल उनके अगेंस्ट ला रहा था और डिसअफेक्शन ला रहा था टू द कंट्री. Thereby, he was arrested under Unlawful Activities Prevention Act, IPC Section 124A for sedition and 505 for conducting public mischief. On the day after his arrest, the police said that there were 2 more FIRs against him in Srinagar and Shopian. ठीक है अब यहां तक सिर्फ इतनी बात आपने समझनी है had I been in your case कि यार यहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया है तो क्यों किया है इसलिए अरेस्ट किया है बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भाई उसने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इलविल कॉज किया है और डिसअफेक्शन लाया है टू द कंट्री एंड ऑब्वियसली असेडेशन के लिए इन सब के लिए अरेस्ट किया गया है. The NIA court which tries the UAPA case gave him bail on February 26, but Shah was immediately transferred to the custody of Shopian police for a case dating back to January 2021 in which the army was complainant. The acquisition against Shah is that he published fake news and the army had forced a seminary to hold a public Republic Day function. After his bail by the Shopian court on March 5th, he was arrested for the third time, this time by the Srinagar police, and the charges in this case remain unclear. तो भाई दो इसके ऊपर केसेस और हुए श्रीनगर और शोपियान पुलिस के अंदर. एक क्या चार्जेस जो हैं वो क्लियर अभी तक नहीं है दूसरे के अंदर फेक न्यूज के ऊपर उसे अरेस्ट कर लिया गया था. The relationship of media with the law enforcing authorities in Kashmir has been fraught. Has been fraught का मतलब क्या है बेटा कि बहुत unpleasant रहा है but never so more than post the 2019 period. In the "you are with us or against us" climate, it seems that the police have free hand to intimidate journalists by summoning them, questioning them about their reports. यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो पुलिस है क्या वो एज अ वॉचडॉग काम कर रही है इनके जो भी रिपोर्ट्स हैं सबके ऊपर बहुत एक्टिवली देख रही है तभी तो वो कह रहे हैं कि वो समन करते हैं उनको क्वेश्चन करते हैं उनको किस चीज के ऊपर करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर करते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के ऊपर भी बात हो रही थी. ठीक है आगे बढ़ते हैं. In a situation of diminished official accountability, the courts must step in. अब अगर वो बोल रहे हैं कि अगर डिमिनिश ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी होगी तो कोर्ट्स को इस सिचुएशन के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा आना पड़ेगा. दे मस्ट सेंड आउट स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट अटैक ऑन जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेसी. कि भाई आप जब जर्नलिज्म को या जर्नलिस्ट को अटैक करते हो तो हम इस अटैक को मानेंगे एज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी. याद रखना एक बात, they are nowhere talking about freedom of right to speech and expression. They are talking about an attack on the democracy. क्या यहां तक सबको पैसेज समझ में आया? Any issue, anyone? On to the passage. किसी को कोई भी वर्ड कोई भी लाइन कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो ask me, otherwise we'll proceed. Should we proceed? चलो we'll proceed now. 6 का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है पहले आप लोग मुझे वो बताइए फिर मैं आपको समझाती हूँ भी हूँ साइमल्टेनियसली. In 1990, a reporter from Delhi was deployed to Kashmir to capture the battle fought by Kashmiri Pandits against the local Kashmiris from being forced out of their own motherland. The actual reports were not released by the media houses because they were constantly pressed and threatened by the then powerful political sources.
In 2020, Vivek, a filmmaker, acquired the secret footage shot by the reporter via an anonymous email, after which he chose to reveal the heartbreaking narrative of Kashmiri Pandit's anguish, suffering, struggle, and trauma as seen through the eyes of Krishna, the protagonist. Vivek was later imprisoned for sedition under Section 124A for depicting in his films how the then government did nothing about the subject of exodus and genocide of the Kashmiri Pandit. It afterwards became a hot topic of political controversy, questioning the current government's inaction in doing nothing to help the Kashmiri Pandits to return to their motherland Kashmir. Decide. ठीक है? अब कृष्णा ने जो भी मूवी बनाई है वो किसके ऊपर बनाई है? ऑन टू होल्ड करना, ऑन टू द देन गवर्नमेंट के ऊपर बनाई है ना? एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा ढंग से दिखाऊं. ऑन टू द देन गवर्नमेंट बनाई है. पॉलिटिकल इश्यू शुरू हुआ तो हुआ किस पे? करंट गवर्नमेंट पे हुआ, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कृष्णा की अरेस्ट हुई है, क्या वो लीगल है कि इलीगल है? हम कह सकते हैं वो इलीगल है. क्यों है वो इलीगल? क्योंकि भाई उसने जो कुछ भी बनाया था वो तो देन गवर्नमेंट मतलब पुरानी गवर्नमेंट पे बनाया था. अब यहाँ पे जो भी कुछ उसे अरेस्ट करा जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि उसने करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया है, तो ये बात तो बहुत गलत है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि कृष्णा की अरेस्ट क्या लीगल है कि इलीगल है? हम कह सकते हैं उसकी अरेस्ट इलीगल है. फॉर दैट वेरी रीजन मैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर देती हूँ. यहां तक समझ में आया? हाउ डिड आई एलिमिनेट देम? राइट नाउ ए एंड सी के बीच में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है. आप में से बहुत से बच्चे, a lot of you are choosing C as an answer. However, C is incorrect. Why is it C incorrect? It is saying Vivek's arrest is illegal before the information he received was neither fabricated nor false. एक बात बताना, पैसेज में कहीं पे भी ट्रूथ के बारे में कुछ भी बात की गई थी? नहीं, कोई बात नहीं की गई थी, राइट? तो हम इसको एज ए आंसर ले कैसे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, राइट? तो हमने सी को एलिमिनेट कर दिया. अब ए को पढ़ो तो ए देखता है, ए क्या बोलते हैं? The arrest of Vivek was illegal because the film depicted an omission by the former government rather than the current government. While I agree with you कि मैम इसके बारे में पैसेज में इतना डायरेक्टली नहीं बोला है, बट एक चीज देखना, वो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है, causing a dent to the image of the लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज. कौन सी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बात करें? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो मतलब वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या ये वाला ऑप्शन is more in consonance with my passage and with my facts? Yes or no? Yes. Hence, this will be the correct answer. Clear है? Any issue, anyone? Should we move further? Right? चलो. अब 7th question. Continuing with the same facts as above, under what circumstances when will Vivek's arrest be considered lawful under section 124A of IPC? अब एक दो बातें यहाँ पे. पैसेज में तुम्हें कहीं पे भी सेडेशन समझाया था क्या? नहीं, ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए. क्वेश्चन किसके ऊपर है कि विवेक के अरेस्ट को कब लॉफुल माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ऑप्शन नंबर बी पहले देखते हैं. वर्ड बी क्या लिखा है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द मूवी वॉज टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, नॉट टू इंसाइट सेडेशन. अरे बाबा, ये तो मूवी के बारे में बात कर रहा है, राइट? एंड मोर सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगर हम विवेक को अरेस्ट कर लेंगे तो हमारी उसकी अरेस्ट को हम लॉफुल कब माना जाएगा? पर ये ऑप्शन तो विवेक को डिफेंड कर रहा है, तो क्या हम इसको एज एन आंसर लेंगे? नहीं, राइट? अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं. सी क्या बोलता है? द मीडिया मिसहैंडल्ड द केस, encouraging the police to mutiny and rebellion. Again, they are not telling us about विवेक का अरेस्ट बीइंग लॉफुल. क्या ये हमारे आंसर को हमारे क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? नहीं. तो मैंने क्या इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ? बिल्कुल हाँ. डी ऑप्शन क्या बात करता है? the film's director has a clandestine goal of inciting class enmity and causing a disruption in peace. Again, ये फिर से फिल्म डायरेक्टर के ऊपर बात कर रहा है. याद रखना एक चीज, विवेक फिल्म डायरेक्टर नहीं था. विवेक was only I'll show you, विवेक was only a filmmaker to that movie. क्यों मैंने तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया? क्योंकि तुम देखो, continuing the same facts as above. विवेक एक फिल्म डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक एक फिल्म मेकर है. तो हम ये भी ऑप्शन हमारे इसको आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन इज एज टू विवेक का अरेस्ट बीइंग लॉफुल. तो हेंस व्हाट आर वी लेफ्ट विद? We are only left with option number A. The content of the movie excited dissatisfaction towards the government established by law. तभी जाके हम विवेक की अरेस्ट को लॉफुल मानेंगे. क्लियर है? आ गई बात समझ में?
any issue, anyone, any problem, anybody? I hope you all are understanding what I'm trying to convey to you. किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं जा रही है? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, चलो. Moving on to the next question. Choose a statement based on your interpretation of the passage that best expresses the author's intent. अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना ऑथर के इंटेंट के ऊपर, कहीं पे भी अपना दिमाग मत लगाया करो, ये देखा करो कि ऑथर पूरे टाइम पे क्या बोलना चाह रहा है, राइट? ठीक है, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने अपना व्यू वहां पे लगा देते हैं, बट वो लिखा है ना उन्होंने क्लियरली कि ऑथर का इंटेंट को देखो. अब अपन इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, राइट? ऑप्शन नंबर ए वो वन बोलता है जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट आर फैसेट्स ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर सीन एज वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. जो बात मैंने पैसेज को समझाते टाइम आपको बताया था कि पैसेज में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है इन द लास्ट लाइन. मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं आपको कहां से बात कर रही हूँ. They must send out a strong message that the attack on journalists and journalism is an attack on to democracy. पर क्या वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो व्हाई आर वी गोइंग टू अज्यूम दैट हियर एंड मार्क दिस एज द करेक्ट आंसर? तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी चला गया बिकॉज इट इज सेइंग कि भाई वन इज करेक्ट. अब टू देखो, द रोल ऑफ द प्रेस इज टू बी वॉच डॉग्स एंड मॉनिटर. A government's action has been one of the fundamental components of the democratic society. The court must step in the situation of diminished official accountability. क्या ये बात पैसेज में मेंशन्ड है? हाँ, ये बात पैसेज में क्लियरली मेंशन्ड है. कहाँ पे मेंशन्ड है? इन द लास्ट पैराग्राफ, जहां पे वो बोल रहे हैं ना कि भाई इसकी वजह से हम बहुत सारे जो जितने भी क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट हैं, ये सब हैं, उनको हम अक्सर देखते हैं कि भाई वो कुछ ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको हम क्वेश्चन करें, समन करें, उनको यूएपीए सेडेशन के अंदर लेके जाएं. तो मतलब कि पुलिस इज ओवर सर्टेनली ओवर हियर वाचिंग एज अ वर्किंग एज अ वॉच डॉग. तो मतलब टू तो हमारा सही है. ठीक है, चलो. तो आई हैव कंसिडर्ड टू एज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो. अब मुझे देखना है कि थर्ड क्या सही है. थर्ड बोलता है अंडर यूएपीए एंड पीएसए द पुलिस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी प्रिटेक्स्ट. क्या ये बात पैसेज के अंदर मेंशन्ड है? बिल्कुल भी मेंशन नहीं है. तो मैं क्या इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ? बिल्कुल एलिमिनेट कर सकती हूँ. फॉर दैट वेरी रीजन क्या डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा. हेंस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट? आगे बात समझ में क्लियर है? बाय द वे ऑफ एलिमिनेशन, तुमने देखा मैंने फोर्थ को पूरा रीड भी नहीं किया है, येट आई हैव माय आंसर. मैं फोर्थ को आपको रीड करके भी बता देती हूँ. गिवन द परसीव्ड threat of state, a Kashmiri journalist faces significant self-censorship in the conflict-ridden region. ये बात भी सही है क्योंकि भाई जो भी रिपोर्ट्स वो लोग पब्लिश करते हैं, पुलिस उसके ऊपर एज अ वॉचडॉग फंक्शन करती है. वो देखती है कि इन्हें सेडेशन के अंदर, यूएपीए के अंदर, इन सब के अंदर नहीं जाना होता, ये जाना होता है. एंड उसके बाद ही इन लोगों को अपनी रिपोर्ट्स इन सबको बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है. तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, 4 इज करेक्ट है ना. तो हेंस C is the correct answer here. ठीक है. 3 नहीं मेंशन्ड है बेटा. 3 कहीं पे भी मेंशन नहीं है अली. उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि they can arrest without pretext. Not even for once it is mentioned in the passage. अगर आपको पैसेज को भी देखना है, आप लोग जो लास्ट लाइन बोल रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि the relationship has been under a fraught. मतलब कि इसके ऊपर काफी अनप्लेजेंट रहा है. More so post 2019. If you are with us without us climate, it seems that the police have a free hand to intimidate the journalists by summoning them. Intimidate मतलब डरा सकते हैं by summoning them, questioning them about the reports, holding the threat of UPA, PSA, sedition over their heads. मतलब कि उनको इन सारी चीजों के लिए वो लोग penalize कर पाते हैं. In a situation of diminished accountability, the court must step in. जब भी accountability diminish होती हुई नजर आती है, कोर्ट को आना चाहिए. They must send out strong message that the attack on journalists and journalism is an attack on the democracy. सिर्फ और सिर्फ ये बात कही जा रही है कि अटैक ऑन द डेमोक्रेसी है. कहीं पे भी उन्होंने ये बात नहीं कही है कि आप उन्हें विदाउट एनी प्रीटेक्स्ट अरेस्ट कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, ओके. Okay, now let's move on to the 9th question, the last second question of our session for today. Mars, an eager journalist, spends most of his time reporting live news events and also works as an activist speaking out against the army's monopoly in the conflict-prone region of Kashmir. Kashmir was declared under the provision of AFSPA that gives the armed forces the power to maintain public order in disturbed areas. Mars reported in his personal blogs
that the armed forces have found to be misusing the oppressive powers given by the act of fake encounters, sexually exploiting women in the disturbed area. What's more disturbing is the fact that armed forces escape with impunity for their actions since legal suits cannot be filed against them as per the act. Thus, AFSPA clearly violates human rights. Mars has been summoned by the police on the grounds of sedition and conducting public mischief. Choose the best alternative that fits the context of the passage based on your understanding of it. ठीक है, अब उसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है तो क्यों किया गया है? सेडेशन के लिए किया गया है और पब्लिक मिस्चिफ के लिए करा गया है, राइट? अच्छा, अब हम एक एक ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करने को देखते हैं कि क्या सही आंसर रहेगा यहाँ पे. ए ऑप्शन कहता है एज अ जर्नलिस्ट इट इज मास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द ट्रूथ टू द पब्लिक, देयरफॉर द पब्लिक police cannot intimidate mass based on their whims and fancies. दो चीजें, पहली बात ट्रूथ के बारे में पैसेज में कोई बात नहीं होती. दूसरी बात, they are not arresting him on to their own whims and fancies, instead they are arresting him on to sedition and public mischief. क्या मैं ए को एलिमिनेट कर सकती हूँ? हाँ. B, Mars's post is seditious in nature. A lot of you are marking B as an answer, but B तो कहीं से कहीं तक सही नहीं हो सकता. हमें पैसेज ने बताया ही नहीं है कि what is sedition. So how can you say that it is seditious in nature? क्या मैं B को एलिमिनेट कर सकती हूँ? हाँ. C क्या कहता है? Mars is merely using social media to exercise his right to freedom of speech and expression for creating awareness of how AFSPA clearly violates human rights. Guys, understand one thing. Time and again, I've been telling you one thing, that the passage only and only talks about democracy. It is not talking about right to freedom of speech and expression. तो क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ? हाँ. Hence, what will be my correct answer? B will be my correct answer. Mars's intimidation will be regarded illegal because it appears that the police have reign and intimidate journalists by summoning them, questioning them about their stories, and threatening them with UAPA, PSA, and seditious charges. यही बात पैसेज की लास्ट लाइन में भी बात हो रही थी, यहाँ पे भी बात हो रही है. Hence, is the correct answer. Clear? आगे बढ़े 10th क्वेश्चन पे. 10th के आंसर्स आप लोग मुझे अपने बताइए, आपने क्या लिखा है? Author asserts that there is no need to run the nation on the basis of bullet while the issue could be addressed on the basis of ballot. Now, before we move forward, एक चीज बताती हूँ. जब भी assertion reason करा करो, सबसे पहले assertion को as an independent statement लो, reason को as an independent statement लो. ठीक है, पहले मैं करके दिखाती हूँ. Author asserts that there is no need to run the nation on the basis of bullets while the issue could be addressed on the basis of ballot election. एक बात बताना, पैसेज में कहीं पे भी बैलेट की बात हुई थी? नहीं हुई थी. क्या मेरा असर्शन ट्रू है यहाँ पे कि नहीं है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. इट्स अ फॉल्स असर्शन, राइट? अब रीजन को एज एन इंडिपेंडेंट पढ़ो. The author urged the judiciary to issue warning to the administration and take responsibility for the situation with weakened official accountability. क्या ये बात पैसेज के अंदर बात की गई थी कि ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहिए, बोली थी क्या? हाँ, बोली गई थी. तो क्या हम कह सकते हैं कि रीजन ट्रू है कि नहीं? बिल्कुल, इट्स अ ट्रू, इट्स ट्रूथफुल. अब A is false, R is true. Hence, D is the correct answer. Clear है? So guys, with this, we are done with our entire session for the day. Let me know if you have any issues or you have anything to discuss. Else, we'll call it a day. Okay? I hope you all enjoyed the session. Also, let me know your scores. Is there anybody in this entire session who scored 10 on 10? Anyone? Achha, just write down your scores instead. Nityank has got 7 on 10. Oh, Sujata has got 3 on 5. Neeraj has got 3 on 5. Okay. Krishnan, I've read कि तुम्हें D mark करना है. Chill. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Renu has got 7 on 10. Nitika has got 4 on 5. Priyanshi 9 on 10. ठीक है, ठीक है. Okay. So I think for now we have Priyanshi as the leading scorer with a score of 9 on 10, and Belinda with a score of 9 on 10, and Kinza Hayat as with the score of 9 on 10. Okay, guys, well done. Keep it up. I'll see you all in the next session. I hope you all enjoyed today's session. It was great interacting with you all. The passages are there onto the Telegram channel, as I had told you earlier. तुम लोग इस सेशन को वापस से देख सकते हो यूट्यूब पे, अगर तुम्हें प्रैक्टिस वापस से करनी है. लेट मी नो इफ यू नीड मोर सच सेशंस,
And anything and everything that you expect from our side, we'd be surely there to help you all through your entire preparation. Bye bye. Have a nice day. Good night.